उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं किया हमने। आप पीडीएफ सेंड करने वाले हो ना इसकी? नहीं, लिखा के दे रहा हूँ तुमको सब पूरा। सर प्लीज पीडीएफ शेयर कर दो। तरह के हम्म कर रहे हैं। हम्म हो गया क्या लिख के? हो गया? हो गया सही। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग तो बहुत फास्ट हो। मतलब समझ गया हो आपको क्या बोला मैंने, है कि नहीं? ये सर नो, यस सर। क्या समझे? सर लेकिन प्लीज आप सर आपका मतलब था कि हम आपको जो लगता है वही हम है। नहीं समझा मुझे। नहीं सर समझा मुझे। मतलब आप जो आप सोचते हो कि हम बहुत फास्ट है लिखने में, हाँ, लेकिन लेकिन हम बहुत स्लो लिखते हैं। वेरी गुड, समझ गए तुम। ठीक है। सर लेकिन प्लीज आप पीपीटी ग्रुप पे शेयर कर दो ना, वो अच्छा पढ़ता है। हाँ करेंगे करेंगे पक्का। ओके अभी आगे बढ़ते हैं। यस सर। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। कनिष्क मेहता क्या चल रहा है? सर पता नहीं, वो कीबोर्ड से आवाज आता है। वो लैपटॉप बहुत पुराना है। अच्छा, देखो अगला टॉपिक क्या है अपना? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। तो बच्चों मार्केट में पेट्रोलियम की बड़ी तंगी चल रही है ना? पेट्रोल भी अभी सोने के भाव से बिकने लगा है ना? घर से बाहर निकलना सोचना पड़ता है, ये है कि नहीं? 110 रुपए हाँ लीटर, सर। 120 रुपए लीटर, करेक्ट? So you know the original cost of petrol is only kind of 30 रुपीज। 25 रुपीज। हाँ 30 रुपीज, 30 रुपीज 40 रुपीज काइंड ऑफ। सर मतलब लूटा गया मैं। वो तो है ही। उसमें से
लेकिन उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है। सर उनको भी कुछ प्रॉफिट मार्जिन चाहिए ना। प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा है उनका, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट है ना 40 रुपए टैक्स लगाती है उस पर, और स्टेट गवर्नमेंट वो भी 40 रुपए टैक्स लगाती है। मतलब है वो चीज़ 30 रुपए का, और हम इधर बेवकूफ़ बने रह रहे टैक्स भर के, है कि नहीं? सर नो। हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो बेवकूफ़ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं सर। नहीं बनना चाहिए। तो क्या करें नहीं बनने के लिए बेवकूफ़? पेट्रोल सेव कर। पेट्रोल सेव करें, ओके, और क्या कर सकते हैं? जरूरत है तो ही बाहर जाए। हम्म। साइकिल यूज करे, शॉर्ट हाँ डिस्टेंस। साइकिल यूज कर सकते हैं, या फिर सर पब्लिक व्हीकल्स यूज करने चाहिए, जैसे कि या फिर इंडिया सीएनजी। में कोई मतलब सीएनजी हाँ सर, सीएनजी भी यूज कर एफिशिएंट सकते फ्यूल है, और सीएनजी। सीएनजी है। और और वो इलेक्ट्रिक कार भी यूज कर सकते हैं, हाँ। टेस्ला। इलेक्ट्रिक कार, करेक्ट, यस, वेरी गुड। सर अभी वृंदावन में इलेक्ट्रिक रिक्शा भी बहुत हो गई है। हम्म, उधर वही चलता है, हाँ, नॉर्थ इंडिया में अब बहुत सी जगह पे वही चलता है। इलेक्ट्रिक रिक्शा भी है और टमटम भी है वहाँ हाँ पे। हाँ, करेक्ट, इलेक्ट्रिक सर रिक्शा एक बहुत। रिक्शा टाइप ये व्हीकल होता है टोटो करके। हाँ राइट। सर उसमें होता है क्या पेट्रोल का यूज? नहीं होता है उसमें, पेट्रोल का यूज नहीं होता है। टोटो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है ना, टोटो। टोटो किस पे चलता है? टोटो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है वो। कोई बैठा है टोटो में यहाँ पर? सर मैं बैठा हूँ। नहीं सर। सर कोलकाता में बैठा था। कोलकाता में बैठे थे। वेरी गुड वेरी टोटो गुड। क्या होता है लेकिन? इलेक्ट्रिक कार रहता है, इलेक्ट्रिक ऐसा ऑटो टाइप रहता है, इलेक्ट्रिक ऑटो। इसमें ऑफ कोर्स इट्स नॉट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ये कुछ 4 5 10 किलोमीटर के रास्ते पे जाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसका इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, राइट। तो अभी कुछ दिन पहले मैं 2 हफ्ते 2 3 हफ्ते पहले मैं वेस्ट बंगाल में था, है ना। तो वहाँ पर भी देखा मैंने, वो बहुत इस्तेमाल करते हैं इसको, टोटो को। सर यूज टोटो। सर आप मायापुर में थे क्या? सर हाँ, हम्म। मैंने मायापुर से ही जर्नी की थी टोटो में, मतलब मायापुर में जाने। हाँ, हम्म। मैंने ही गया, मेरे दादी दादा गए हैं उधर। सर मैं बैठी हूँ टोटो में, मुझे अभी याद आया। मैं मैसूर पैलेस के मतलब वहां गई थी तो बैठाया था उसमें। करेक्ट, मायापुर में ही था मैं, है ना। तो वहीं पर है टोटो, मायापुर में। हाँ सर मैं भी बैठा हूँ। करेक्ट करेक्ट, गुड, वेरी गुड। और क्या बोल रहा था मैं? और क्या डिस्कस, हाँ राइट। तो क्या बोला है, पढ़ो तो जरा पेट्रोल के बारे में, सर मैं पढ़ूँ? पढ़ो। Petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters, and cars. Heavy motors vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. करेक्ट, पेट्रोल यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स, राइट, है ना। हेवी जो रहते हैं उनको क्या इस्तेमाल करते हैं? वो डीजल रहता है। कौन महंगा रहता है, डीजल या पेट्रोल? सर पेट्रोल। डीजल। और पेट्रोल ज्यादा महंगा। पेट्रोल इज मोर कॉस्टली देन डीजल,
करेक्ट ना, पेट्रोल ज्यादा कॉस्टली रहता है किससे, डीजल से, राइट, पेट्रोल इज मोर कॉस्टली देन डीजल, and he's saying that petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum, correct? तो पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है, उससे हमको क्या मिलता है, उससे हमको पेट्रोल और डीजल वहाँ वही से हमको मिल जाता है, करेक्ट। तो सोर्स ऑफ पेट्रोल एंड पेट्रोलियम ना, वही से आता है आपका पेट्रोल और डीजल, करेक्ट। तो पेट्रोलियम इज काइंड ऑफ नॉट अ प्योर थिंग, करेक्ट। पेट्रोलियम है जो है आपका, वो बना हुआ है किससे, पेट्रोलियम में बहुत चीजें रहती है बच्चों ना, आपके पेट्रोलियम में बहुत सारी चीजें रहती है, करेक्ट। हाँ, तो सबसे पहले तो है आपका हाइड्रोकार्बन, राइट। सर मतलब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से घर पे भी बना सकते हैं ना घर पे तुम सिर्फ खाना बना सकते हो बेटा, सर इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है पेट्रोल की। क्या क्या, हाइड्रोकार्बन प्लस यू हैव सल्फर, करेक्ट, प्लस हाँ सर, ऑक्सीजन, बहुत ही अच्छी आती है पेट्रोल की स्मेल। सर ये आप पेट्रोलियम का फॉर्मूला बता रहे हैं क्या, हाइड्रोकार्बन प्लस सल्फर? राइट, मतलब ऑल दीज कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन पेट्रोलियम, ये सब चीजें पेट्रोलियम में मौजूद होती है बच्चों, नहीं नहीं मेरी बात, ओके। पेट्रोलियम बहुत सारा हाइड्रोकार्बन रहता है, और कभी कभी 100 या 100 से ज्यादा भी 100 या 100 से ज्यादा कार्बन भी रहते हैं पेट्रोलियम में, है ना, एक स्ट्रेट चेन में, राइट। सो यू कैन इमेजिन, so when petroleum is unrefined, okay, right, when petroleum is what, petroleum is unrefined, है ना, unrefined form of इट्स कॉल्ड क्रूड ऑयल। petroleum is equal to what, क्रूड ऑयल। crude oil, right। तो petroleum is also called what, petroleum को rock oil भी कहते हैं, है ना, correct। why, because the word petro means what, रॉक एंड ऑलियम मींस ऑयल। ऑयल petro means rock and oleum means oil, correct। so that's how it is called as rock oil, so it is called as what, रॉक ऑयल, क्योंकि उसको नीचे से खदेड़ के निकाला जाता है ना, अंदर से। यस और नो, अग्री विद दिस पॉइंट्स। तो पेट्रोलियम हाँ भी सर। कैसे, पेट्रोलियम भी कैसे बनता है, पेट्रोलियम का बनाने का तरीका भी क्या होता है, पेट्रोलियम का बनाने का तरीका भी कुछ इसके जैसे ही होता है, करेक्ट, कोल का कोल जैसे ही होता है। तो इसमें भी क्या होता है ना, बस बस वो जो कोल रहता है वो धरती पे बन सकता है, लेकिन पेट्रोलियम जो था वो मोस्टली समंदर में बनता है, सी, रिवर्स, ओशन, करेक्ट। तो क्या हो जाते हैं, जो जीवित व्यक्ति रहते हैं, है ना, मछलियाँ, पेड़ पौधे, है ना, वो जब चले जाते हैं अंदर, उससे पेट्रोलियम आपका बनता है, ओके। तो ये जो जीवित मर गए हैं जो, है ना, ऑर्गेनिजम्स, है ना, उनको सालों साल दब जाते हैं वो सी बेड में, करेक्ट, उसके ऊपर सैंड, क्ले, एक के ऊपर एक, और वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स में हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। सर वो ये ज्योग्राफिकल चेंज। सर कहाँ पे तो भी सुना था कि जहाँ थार डेजर्ट अभी है ना, वहाँ पे पहले एक ओशियन, वहाँ पे सब कुछ था, ओशन, ट्री, सब, क्योंकि वहाँ पे ये साइंटिस्ट को फिश के स्केलेटन मिले, उस पे सब कुछ था, और एक ड्रास्टिक चेंज इन वेदर हो गया, और इसीलिए आज हमें सहारा डेजर्ट मिला है।
सहारा नहीं, थार आई गेस। मुझे सहारा का पता है। राइट, करेक्ट, whatever you have said is correct, है ना। तो सालों साल इसमें, है ना, दब जाता है ये समंदर में, और वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो अंडरग्राउंड में ही वो बन जाता है, और उससे फिर हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, so we'll now see. So you understood this point? Yes sir, have you written this everything? हाँ बच्चों, इसको लिखा आपने? यस सर। सर मैंने मेरा स्क्रीनशॉट लेना रह गया। ओके, नो प्रॉब्लम, बाद में देखेंगे उसको। यस सर। सर आपके स्क्रीन नहीं दिख रहा। Good grammar and spell. वेट वेट, for deserts and plains, and of course underwater. But if oil is a fossil fuel, how do those fossils get under the ocean? Oil is a mystery. We have some ideas. Place. It's true. It helps to understand how सर oil. आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। रुको भाई। Material, prehistoric plants and animals, oxygenated. ठीक है, कुछ तो देखेंगे अभी। हेलो 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 हेलो, यस हाँ आनंद सर। सर, हाँ आनंद सर on the side. हेलो हाँ Am I talking to आनंद शाह? सर क्या है? हाँ, यस सर, यू आर टॉकिंग टू आनंद शाह। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या करूँ मैं अभी? Oil seems सुनाई दे रहा है क्या आपको? हाँ सर। to pop up everywhere, in shale, under deserts and plains, and of course underwater. But if oil is a fossil fuel, how did those fossils get under the ocean? Hey Slick, Trace here for D News. Oil is a mystery. Scientists don't really 100% know where it came from or how it got underground. But because we know about plate tectonics, we at least have some ideas of how it got under the ocean. Oil is what we call a fossil fuel. It comes from dead things, especially when there are a lot of them gathered in one place. It's true that oil famously comes from deserts, like on the Arabian Peninsula, but that location is, well, actually more or less random. Roger N. Anderson of Columbia University told Scientific American, quote, "Plate tectonics determines the location of oil reservoirs. Because the Earth's surface is constantly changing and shifting, oil can end up in all sorts of weird places. It helps to understand how oil is made first, though. Hundreds of millions of years ago, organic material, prehistoric plants and animals, accumulated at the bottom of oceans, rivers, and swamps. Think of it this way. The ocean is deep, and when things die at the top, they sink all the way to the bottom. When that happens a lot, they'll pile up. Living things are made of proteins, carbohydrates, lipids or fats, and lignin, woody polymers, that's for plants. When these decomposing organics become compressed under more and more material in an anoxic environment, they break down strangely. Essentially, the organic matter had to die and quickly find its way to a place without oxygen to avoid regular decomposition. Oceans are great for this because the seafloor is not very oxygenated. At that point, it breaks down super slowly and more dead stuff builds up and adds more and more pressure. Eventually, the pressure of all that material forces the water out, and the proteins, lignin, and carbs break down. Then all that is left is a lipid, sugar, and amino acid ooze.
Occasionally, this happens near enough to a crack in the Earth's crust that it can become trapped. Then, by adding heat and pressure, something geology and plate tectonics is great at, this mix of decomposed organisms becomes subject to chemical reactions, forming what's called kerogens. Over millions of years and with more heat and pressure, that goes through catagenesis, where the kerogen cooks into hydrocarbon chains. Humans then look for telltale signs of these deposits. When that happens, though, it doesn't form a giant lake or pool under the ground like you might be picturing. It's actually stuck in the pores of surrounding rocks, like water clinging to a window pane. The immense pressure of the Earth's crust can keep the oil trapped under solid rock. But if an oil well pushes through it at the right place, that oil can gush out in a tower of black liquid. Companies can then take this and make petroleum. The more we understand about where ancient seas and forests were, the better scientists can predict where oil is trapped in Earth's crust today. So, because oceans are great at providing the perfect conditions of low oxygen and high pressure, and it's where a lot of this decomposing organic समझ रहे कुछ नहीं? समझ रहा है सर। पक्का? सर कुछ नहीं समझ। हाँ सर। सर के ऊपर से जा रहा है बाउंसर। सर के ऊपर से आ रहा है, तुम्हारे सर के ऊपर से? सर टाइप ऑफ बाउंसर ही है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। और सर वो कितना फास्ट बोलता है। What drives our car planes? High energy about tropic animals and plants, the ocean, and in the absence of oxygen. Wait. Good morning, children. Today we shall learn what. कोई ढंग का वीडियो नहीं मिल रहा है। The fossil fuels are fossil fuels because animals that lived millions of ocean floor and were buried under thick sediment and of. ठीक है बच्चों, कुछ तो मिला है अभी, ठीक है? Fossil fuels are petroleum, coal, and natural gas. They are called fossil fuels because they are remains of plants and animals that lived millions of years ago. Petroleum is formed from the remains of dead organisms that fell on the ocean floor and were buried under thick sediment, and over millions of years, high pressure slowly converted them to petroleum. Natural gas is mainly methane. It is often found with petroleum. It's formed in the same way. Here, the compounds are broken down and converted to gas by high temperature and high pressure. Coal is the remains of lush vegetation that grew in ancient swamps. The dead vegetation was buried under thick sediment. Over millions of years, pressure and heat slowly converted it into coal. Petroleum is a mixture of hundreds of different compounds. They are organic compounds, which means they contain carbon and usually hydrogen. In fact, most are hydrocarbons. They contain only carbon and hydrogen. Petroleum is volatile, means it catches fire very easily, and the flammability is high, and the octane rating varies from 87 to 98. Octane rating for USA is 87, 89, and 92. For other countries, other parts of the world,
they use 91, 95, and 98. The higher the octane rating, the higher the cost of the petrol. This number indicates how well the fuel resists knocking during combustion. For example, when your car manufacturer say to use 92, the day you use 87, your engine will knock. 87 and 92 are basically the same. The difference is that if you use 92, it reduces the carbon emission and your engine performs very well. Your user manual will tell you which fuel to use according to your car. But if you are driving old cars, you don't have to worry about that. Me, I use 87. ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा बहुत तो समझा होगा कुछ आपको। सर नहीं। सर ठीक ठाक समझा, क्योंकि उनका लैंग्वेज ही बहुत मतलब इंग्लिश ही था, और उसका वो जो टोन था वो बहुत अलग। ठीक है। फिर से आते हैं। ओके, we said that believe that petroleum was formed from organisms living in the sea, right? Okay, next. तो क्या लिखा है यहाँ पर? Formed from organisms living in the sea, समंदर में रहने वालों की वजह से हुआ ये लिबरेशन इसका, करेक्ट। और क्या हुआ था यहाँ पर देखो, all the organ died, the body settled at the bottom of sea and get covered with layers of sand and clay, or meaning to the absence of air, high temperature and pressure transform the dead organs into petroleum and natural gas. समझ में आई मेरी बात बच्चों? Okay. So it comes over the years by the dead remains of organisms. Okay. Like very simple to understand. है कि नहीं? सर Right. वो स्लाइड दिखाना 1 मिनट। स्क्रीनशॉट लिया है सर, अब आप आगे बढ़ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर स्क्रीनशॉट ही लेना है या फिर अभी कॉपी कर ले? स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर, ठीक है, जस्ट वन लिखना है सेकंड। तो लिख लो, नहीं तो लिख लो। ओके सर, दैट इज मोर प्रेफरेबल। नहीं वेळ नाही राहणार थोड़ा। लिख लो 1 मिनट में, तब तक मैं भी पानी पी के आता हूँ। ठीक है, आप लोग कुछ पानी पीना तो आप लोग पानी सर माय सिस्टर वाज सिटिंग, शी जस्ट ओके, नो प्रॉब्लम। आई विल आल्सो ड्रिंक सम वाटर। ओके, इफ यू वांट यू कैन आल्सो ड्रिंक सम वाटर एंड कम।
Sir, please admit Tanish Mehta. सर हो गया लिख के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी।